जब से मैं अपने माँ के कोख में थी, तब से मैं कह रही थी कि बड़ी होके मैं हीरोइन बनूंगी। हम आपको सब पुकारते हैं हीरोइन के तौर पे, लेकिन आपकी फिल्म आ रही है जिसका टाइटल हीरोइन है। तो क्या ये शब्द आपके ज़हन में कोई बदलाव लाता है इस फिल्म को करने के बाद? अम, मैं ये नाम सुन सुन के ही बड़ी हुई हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यही बात कही है, कि जब से मैं अपने माँ के कोख में थी, तब से मैं कह रही थी कि बड़ी होके मैं हीरोइन बनूंगी। तो दैट इज द ओनली थिंग आई नो। So, is that rock on your left hand an engagement ring? Well, I've been wearing this ring for the last 6 years. So, if you think it's an engagement ring, I'm happy. करीना, क्या आपको लगता है कि आप ही एक नैसर्गिक अभिनेत्री बची हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? आर यू द ओनली नेचुरल एक्ट्रेस लेफ्ट इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? क्योंकि ज़्यादातर एक्ट्रेस एलए जाती हैं, आप स्विट्जरलैंड जाती हैं और लंदन जाती हैं। But I think, yeah, but, नहीं, आपका question is so unfair. I cannot answer this question. I'm so sorry, but पर आपको लगता है कि आपके अलावा आपको लगता है या फिर सारी ही आर्टिफिशियल हैं? अगर आप जवाब नहीं देती हैं how can I cannot answer this question at all. But I तो नहीं, कौन एक्ट्रेस है आपके अलावा जो नेचुरल है? आप सिड रॉय कपूर से पूछिए कि उनको कौन लगता है कि सबसे नेचुरल एक्ट्रेस कौन है। अच्छा, पता है आप कैसी लगती हैं? मतलब नेचुरल हैं तो कैसी लगती हैं आप? यू लुक लाइक, योर बॉडी लुक लाइक सब पियर, योर cheeks look like a Kashmiri apple. All right, on those notes of compliments, ladies and gentlemen, we'll wrap up this question and answer round. Thank you so much, everybody. Thank you so much, our dignitaries. ना, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपकी पहली फिल्म रिफ्यूजी से लेकर हीरोइन तक, किसमें करीना ने खुद को सबसे खूबसूरत पाया है, आपका जवाब क्या होगा? वेल, खूबसूरती एक तरफ और एक्टिंग एक तरफ, तो आप किसकी बात कर रहे हो? जिस फिल्म में मैं खूबसूरत लगी हूँ या जिस फिल्म में मैंने एक्टिंग की है? जिस फिल्म में आप खूबसूरत लगी हैं। वेल, आई थिंक पहली फिल्म जो है बहुत ही स्पेशल रहती है। एक जो रॉनेस है, जो इनोसेंस है, वो वापस कभी लौट कर नहीं आती, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन। आई थिंक द फर्स्ट फिल्म इज ऑलवेज द मोस्ट स्पेशल, सो आई थिंक इट विल बी रेफ्यूजी। और अगर एक्टिंग कहें तो करीना कहाँ जाएंगी? वेल, एक्टिंग में तो अभी आई थिंक हीरोइन का नाम लेना तो डेफिनेटली हक बनता है, तो डेफिनेटली मैं हीरोइन कहूँगी। Kareena and Madhur, both I have a question each. This side, on your left. Madhur, Jyoti here. Yeah. yeah. Is calling. Acha, first question, ladies first. So, Kareena, how nervous are you as far as the release of the film is concerned, and how excited are you in the fact that you may be walking away with the national award next year for your performance in Heroine? Thank you for being so kind, but national award comes later. What is important is the film's release on the 21st of September. Well, I think we are not overconfident, but I think we're confident, which is a good thing to be. So we're excited and confident both. What makes you jealous in life? Positive, negative, whatever you think at this point of time? Well, according to me, I don't know. Well, I'm mostly jealous of people who go on holidays, even though I take quite a few, which I'm sure Mother and Sid are not going to let me get away with. But yeah, I'm jealous of those people because I like traveling. I'm jealous of those people who eat more than I do because I love food. So I'm jealous for all these positive things in life, nothing really negative. Kareena, here, this is Rajiv here. I just wanted to ask you, finally your professional union with Madhur has happened. So of all the films he has done with all the heroines having powerful roles, which is the one you would have liked to do or which you wish you had done? Or maybe you were to do and you could not do it? Well, I think it would be Page 3, because that was a film which I think we both wanted to do, and the dates didn't work out. And whose role in that, Page 3? Were they Konkana and Well, Tara? yes, Konkana's role, of course. Okay. So. Thank you. करीना, रियल लाइफ में कितनी सिमिलर है ये जो हीरोइन है इस फिल्म की
रियल लाइफ हीरोइन करीना से? वेल डेफिनेटली लोग समझते हैं कि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ होगी, बट ऑफ कोर्स जिस तरह से लोग जानते हैं कि मधुर भंडारकर अपनी फिल्म्स में दिखाते हैं कि द हीरोइन विल बी स्लाइटली अग्रेसिव, बोल्ड, मैनिपुलेटिव, you know, slightly edgy, dark, but I don't think any of these characters is what I am personally. And जैसे प्रोमो में दिखाया है कि लड़की काफ़ी ओवर इमोशनल है, संकी है, तो मैं definitely I'm not any of these things. Kareena, to your left, would like to ask you this, that for which date are you finally giving us an invitation for your D-Day? Well, yes, 21st of September. Kareena, here. To your right. Left, sorry. Here. Well, let's make that Here, last here. question of the evening. Every girl inspires to be like you. You're an inspiration in fashion, beauty. And Jealous 21 has created this whole range on your look in the movie. What did you think of the collection and what was your favorite look in the movie? Well, I'm really happy and honored that Jealous 21 has done this collection for me. Style is, of course, very important to, I think, every woman, and every woman has their own inherent style. As for which is my favorite look in the film, I think the song is yet to come out. It's a song that's going to be released on the 9th of September. It's the title track of our film. I think all the three looks in that song, as in Madhur's words, Jalwa. And For all of you who have questions, you can get in touch with their PR for a one-to-one interaction. Okay, there's a lady in the front row who's been itching to say something. She's the last person to speak before we wrap up this question and answer. Dream come true for us. And So you sweet. know, you're really lovely, all of you. Thank you, and I'd just love to wanted to give say you a that. picture, so please come up on stage. Thank you. I'd like to give you a picture. excuse me, Thank you so much. Hello. All right, on that note, One second, last question. one question for Siddharth Roy Kapoor. I have one question for Siddharth Roy Kapoor. Can I ask? Yeah, please.